Hey all, we are at the next chapter of our IFM series for class ninth, that is Unit 4, What is Financial Planning? So in this chapter we will learn about setting goals, analyzing information, creating a plan, implementing that plan, and monitoring and modifying the plan. Okay, so here we have an example that let us consider the example of playing a game in the PT class. So first we'll set a goals. The game to be played cricket or football. So we'll see the team members available. Cricket में we need fast bowlers, spinners, batsmen in form. ठीक है and for football we need goalkeeper, center, forward, striker, everything. Then we'll create a plan. Analysis करने के बाद we'll create the fast bowlers, spinners, bowling the first a few overs, choosing openers, considering their strength and weaknesses. यही हम फुटबॉल में भी करते हैं. देन वील इम्प्लीमेंट द प्लान कि जितना ओवर खेलना है, टाइम कितना है, कोई प्लेयर इंजर्ड तो नहीं हो गया, और फोकस करना है कैसे हमें जीतना है. Then monitors and modified changes in the team to be adopted. Alternate plan to check reverse players available. ठीक है, किसी की तबीयत खराब होगी तो फिर आपको अपना खुद का प्लान चेंज करना पड़ेगा बोथ द गेम्स में कि नहीं अभी इसमें तो ये खराब तबीयत वाला प्लेयर जाना था तो अब ये दूसरा प्लेयर जाएगा. Alright? If you ask your parents, they may tell that money which they earn is very important for running their house. Obviously, everything we want comes from money. ठीक है, तो money allows them to meet the household expenses. अब एग्जाम्पल में अगर हमसे पूछेंगे तो जैसे कि पेट्रोल है. पेट्रोल होता है ना कार और स्कूटर के लिए. सेम फैमिली कैन नॉट गेट टू फार जस्ट लाइक विदाउट पेट्रोल अ कार वोंट गेट टू फार. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर. ठीक है. So now on your next birthday you may decide you wish to buy a new cricket bat, go for a movie, or simply throw a party for your friends. These are your personal goals on a birthday. For all these activities, what is common? The common factor here is you need money for achieving the end results, whatever it is, cricket bat, movie, or a party for friends. For achieving any goals, you need money, and whatever you realize it or not, you use some kind of plan to achieve your goals. ठीक है, तो अब आपको बर्थडे पार्टी करनी है, आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने बर्थडे पे, एवरीथिंग नीड्स मनी. ठीक है, और आप हर चीज़ देखो प्लान करते हो. जैसे अभी भी अगर आपने ये वीडियो खोला है तो आपने प्लान किया कि नहीं मैं आईएफएम का फोर्थ चैप्टर पढ़ता हूँ कॉज मेरा टेस्ट आ रहा है या फिर ताकि मैं टेस्ट में अच्छे से कर पाऊँ. तो आपने ये वीडियो खोला है. दैट वॉज फॉर वन ऑफ योर प्लान्स. तो ऐसे ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग में भी करते हैं. एंड माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. बहुत ही डीप लाइन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो मतलब यू विल फेल. प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर योर सक्सेस इन लाइफ. ठीक है, अब व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली वी वांट टू नो. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस of defining goals, developing a plan and achieving them, and putting the plan into action. It is the blueprint for handling all aspects of your money, including spending, saving, and investing. Some people plan well and have the rewards to go with it. Nice cars, comfortable homes, savings. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप अपने गोल्स डिफाइन करोगे, प्लान बनाओगे और उस प्लान को एक्शन में डालोगे ताकि आप अपना मनी डिसाइड कर सको कि कहाँ सेव करना है, कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. ठीक है, और जो लोग अच्छे से प्लान करते हैं वो उसके बेनिफिट्स भी लेते हैं. उनके पास अच्छी कार्स होती है, कंफर्टेबल घर होते हैं, ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, फन वेकेशन ट्रिप्स होती हैं. और बाकी लोग जो प्लान करना नहीं सीखते हैं कभी इनफ मनी नहीं बचा पाते हैं. सो ये जो डिफरेंस है कि हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वील नो दैट. तो स्टेप्स में है फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे. ठीक है, एंड द फर्स्ट स्टेप हेयर इज सेटिंग गोल्स. सबसे पहले आपको गोल सेट करने हैं कि एग्जांपल के साथ करते हैं. आई वांट टू बाय दिस रेड बॉटल. अब मैंने एनालाइज किया इंफॉर्मेशन कि what is the price of the red bottle. Once I've analyzed the information, I'll create a plan कि okay, the red bottle costs 500, I'll save 100 rupees per month and I will buy this red bottle after 5 months. Then उस plan को implement करना है. कैसे implement करेंगे
कि रेड बॉटल है हमारे पास, 5 मंथ्स के बाद खरीदनी है, तो हर साल 100 रुपीज बचाएंगे। अब इमेजिन एक आपके किसी थर्ड मंथ में सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इमरजेंसी हो गई, आपको किसी को अर्जेंटली पैसे ट्रांसफर करने पड़े या कहीं पे आपको कुछ खरीदना पड़ा, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस मंथ आप मनी नहीं बचा पाए हैं। सो इन दैट केस यू विल मॉनिटर एंड मॉडिफाई द प्लान। कैसे? कि आप पहले चेक करेंगे कि अब आपका कितना होगा, एंड यू आर इन द थर्ड मंथ, तो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप 150 रुपीज बचाएंगे, ताकि टिल द एंड ऑफ 5 मंथ्स आप ये रेड बॉटल खरीद लें। ठीक है। सो अब आप ये देखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस एंड अ थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो क्योंकि जो प्लान है वो खुद ही राइटिंग में होगा, बट इट कैन एंड शुड चेंज ओवर टाइम एज योर सर्कमस्टेंसेस। तो अभी हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि आपको अर्जेंटली किसी को अपने सेव्ड 100 रुपीज थर्ड मंथ के देने पड़े थे, तो यू हैड टू चेंज योर प्लान बाय गिविंग 50 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द नेक्स्ट 2 consecutive months। ठीक है। सो मे बी द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज नोइंग योर सेल्फ। आपको पता था कि या आपकी सैलरी इतनी है, आप हर मंथ में 500 रुपीज बचा पाएंगे, एंड उसी बेसिस में आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की। ठीक है। तो आपको खुद को जानना चाहिए, उसके लिए यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस कि व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट मनी टू डू फॉर, व्हाट काइंड ऑफ करियर डू यू वांट, वेयर डू यू वांट टू लिव, what kind of car do you want to own. The answer to these questions will all involve money. Obviously आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ बनना है, पढ़ना है, कोर्स करना है या कहीं पे भी रहना है, you will have to get money, and money will be one of the basic resources needed. ठीक है। So here we know now कि money is very important resource. Next, now we know should know about our needs and wants. Okay, so बहुत ही easily समझेंगे। Needs में wants में क्या difference है? Needs are something that is basics, हमें चाहिए ही चाहिए, without needs our survival will interrupt, like food, clothes, and a place to live. But wants are something that we wish, uh, जैसे कि मतलब इनसे they are not connected to the survival, they are just there for our happiness and satisfaction, and simply increase the quality of living. So here needs में हम क्या कह सकते हैं कि maybe needs is basic food to eat or basic clothes to wear. But wants me, you can say that you want to eat in a hotel or a restaurant and want branded clothes to wear. That is the real difference between needs and wants. Okay, so going out for movies, eating out, going on a vacation are all wants. Wants are fun and interesting, but there's nothing wrong to have wants. However, for people with limited amount of money, needs are foremost priority. Okay, now some examples of values. ठीक है, so first we know what are values. So people define needs and wants differently, and that's okay depending on their values. तो नीड्स एंड वांट्स आप अपनी वैल्यूज पे लगाओगे। योर वैल्यूज आर सिंपली द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ that are very important to you. So how will you define value? As beliefs and practices. Lots of things may influence your values such as family, friends or your teachers. हर चीज से आपका value influence होगा. So what are the main examples of your values? अर्निंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, करेंटली तो आपका यही होगा कि या आईएफएम के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना है, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग द वीडियो। सो सी इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू हैड द वैल्यू कि यू नीड गुड मार्क्स, so you thought about it, you set the goal that yes, I will get good marks, you will created the plan कि okay, today I will watch the video, then you implemented it कि yeah, the time you decided to watch the video, you are watching the video right now. And if you were busy at that time,
You changed your time like from 6 o'clock to 8 o'clock to watch the video just to achieve your goal. Being responsible with money, being on time to the class, telling the truth, spending time with people you love, finishing the homework, these are all your values. And whether you realize it consciously or not, you do have a set of values. Everybody have a set of values. Either they are good or they're bad. Either they are related with money or not related with money, or they're like spending money, saving money, unwanted things. Everything counts in your value. The more aware you are of your values, the easier it is to set goals. जितना आपको अपनी वैल्यूज पता है उतना इजीली आप अपना गोल सेट करोगे. That will make your life satisfying and enjoyable. Okay, so on the way of planning your future is by understanding and implementing your goals, which are based on the values you have. All right. सो अब आपको अपना गोल्स बनाना है. तो स्टेप्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? अभी अभी हमने पढ़े थे व्हील में. Setting goals, analyzing information, creating a plan, implementing a plan, and monitoring and modifying the plan. So, step one is setting goal. So, a goal is a destination, okay, something you want or need, which you acquire by taking certain steps. ठीक है, तो गोल एक डेस्टिनेशन होती है. या तो आपको वो चीज चाहिए, इट इज योर नीड, और ईदर इट इज योर वांट एंड यू अक्वायर्ड बाय टेकिंग सम स्टेप्स. कैसे? क्योंकि इट गिव्स यू द डायरेक्शन टू द प्लान ऑफ योर एक्शन. ठीक है. तो one of the most valuable things you can learn to do is identify your goals clearly. ठीक है. If you know how to identify your goals, that is something really valuable you have. And the easiest way you make your goals is you make smart goals. SMART. Smart goals may they have different words standing for holding different meanings. So SMART. Here S stands for specific. Specific होना चाहिए आपका goal. ठीक है. Then M stands for measurable. You should know कि कितना आपको करना है. A stands for attainable. R stands for realistic. And T stands for time bound. That's how you make your goals. ठीक है. So T stands for time bound. तो now हम आते हैं सबसे पहले specific पे. So goal setting must be specific. What you want to achieve is to be specific. Specific goal setting will lead to plan and work towards that. So specific goals कैसे हो सकते हैं? I want to spend my beach. I want to spend my Sunday at the beach. ये आपका specific goal है. I want to do something on Sunday. आपको नहीं पता क्या करना है, but कुछ तो करना है. I want to buy a motorbike in another 2 years. Buying motorbike is specific. But I want to buy something. मेरे को नहीं पता कुछ, बस खरीदना है, मन है, पैसे खर्च करना है, कुछ खरीदना है 2 साल के अंदर अंदर. Then second stands for measurable. So goals should be measurable. ठीक है. Suppose I need 60,000 to buy the motorbike. Yeah, you will be able to like कि कितना पैसा आपको चाहिए. But I need some money to buy a motorbike. What does this mean? You don't know how much money you need to spend your to attain your goal. Now it should be attainable. ठीक है. The goal must be reachable for you. It's not कि आपने बहुत ही फेंक दिया and then you don't know how to achieve the goal. I will save 2,500 per month for a period of 2 years from the salary of 10,000 per month to buy a motorbike worth rupees 60,000. Saving 2,000 out of 10,000 per month is possible. I will save 12,000 per month out of my salary of 10,000. See, now if you're saving 12,000 out of a salary of 10,000, that's really not possible. Then we come to realistic goals. I will buy a motorbike worth 60,000 by saving 2,500 per year. And यहाँ पे unrealistic है. I will buy a motorbike tomorrow by getting a loan from the bank which is near my house. क्या आपको एक दिन में लोन मिल जाएगा? और मिल भी जाएगा तो आप एक ही दिन में मोटरबाइक खरीद लोगे? Getting a loan involves so many formalities to be completed when you are eligible for getting a loan as per bank policy.
So you cannot simply say that I will get a loan tomorrow. It's not realistic, okay? Then a goal should be time bound. For example, I want to buy a motorbike in another 2 years. You know when you want to buy in 2 years. But untime bound, non time bound is I want to buy a motorbike in some years. Don't define some years. It should all be measurable and time bound. Okay? ओके नाउ सैम्पल स्मार्ट गोल्स टाइमलाइन ठीक है तो अभी टाइमलाइन में होता है कि शॉर्ट टर्म है अगर तो वो विद इन अ डे और अ वीक और अ मंथ विद इन 3 मंथ्स शॉर्ट टर्म मैक्स टू मैक्स आपका 3 मंथ्स तक चल सकता है ठीक है एग्जाम्पल सेव रुपीज 200 इन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ सो आई कैन टेक माई फ्रेंड आउट फॉर अ मूवी ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है इंटरमीडिएट क्या है कि आप क्या विद इन अ ईयर फ्यू मंथ्स और विद इन अ ईयर आपको वो काम करना है लाइक रुपीज 200 एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स टू बाय अ न्यू टी शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है after a year like group of years 3 4 years में long term more goals are more than a year those long term goals require patience to achieve and a willingness to give up something you want in return for something better later this means कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है example save 2000 rupees per year for the next 4 years to buy a hi-fi music system now we come to step 2, which is analyze information. The second step in financial process is to evaluate information. ठीक है? About yourself, you should know how you will be able to do questions. Ka hai, how do you get money? Do you receive an allowance? How much do you get each week? How much do you spend each week? What do you normally spend your money on? ये सब questions आपको पता चलेंगे. You will know that कितना money आप save कर सकते हो और उस basis पे आप अपना plan बनाओगे. Step 3. Once you have the information available to do where you stand in terms of your finances today, you can match your resources with your goals. Do you have enough money with you to meet your goal? Whether it is the new t shirt or trousers or going out for a movie. If not, what do you need to do? What are you are facing in a situation of limited resources? So what do? It's time to make some financial decision and formulate a plan. Okay, let's say you have two goals. A, to save rupees 300 by the first of next month to buy a game box. B, save 900 within 3 months to buy a sport shoes. Then you have to choose between them कि कौन सा पहले करना चाहिए which is more important. ठीक है तो for analyzing the information available with you, you would know where you stand financially today, how much money you have, how much money you can save, etc. Now you would have to decide if you are able to achieve both goals or just one goal. In case you're able to save 300 rupees within the next month, you can buy a game box, but then you won't be able to buy sport shoes after 3 months. ठीक है? So basically this is the only thing. And why do we face difficulty here? Just because हमें नहीं पता how are we going to make our plan. Then we come to step 4, that is implementing the plan. So, with your plan in place, all you have to do is make it happen. Knowing what you should do and actually doing it can be challenging. It takes discipline, be focused on your goals, do not lose track of what you want to achieve within the time frame you have chosen. Don't waste your resources on unwanted and unnecessary pursuits. This is also known as taking personal financial responsibility. You have a choice when it comes to being responsible for your money. Use the money wisely so that your goal is achieved as per your plan. Okay, so basically अब ये कह रहा है कि आपको अगर plan implement करना है then you need to be disciplined, but again disciplined रहना is very difficult, so आपको unnecessary चीज़ों पे अपना resources waste नहीं करना है. Secondly, खुद को distract नहीं होने देना है and you have to constantly think of what you want to do, like basically manifest so that you achieve your goal. Step 5, monitor and modify the plan. After you create a plan, be aware you may need to change it with time. You will run into unexpected obstacles. बहुत obvious सी बात है, कभी भी कोई भी emergency आ सकती है. Okay, that's all very normal. It's life and it's a part of life.
ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, ओवर टाइम योर वैल्यूज एंड गोल्स में चेंज, सो डोंट बी अफ्रेड टू रिवाइज योर प्लान। ओके, जो भी प्लान आप अभी अकाउंट में ले रहे हो न्यू गोल्स पे, अगर भी उसको भी आपको चेंज करना पड़ा है, देन कोई बात ही होगी, वरना यू वुड हैव, यू इफ यू आर डिसिप्लिन आप कर लेते, बट कुछ हुआ इस वजह से यू नीड टू चेंज द प्लान, सो इट्स ओके, नाउ यू मॉडिफाई योर प्लान and try to make it as simple as you can. Okay, so when you complete a goal, cross it off your to-do list. Always make a to-do list. ऐसे normally भी, not for a chapter learning. कभी भी goal बनाओ, make a to-do list. Then revisit your list of goals and do a clear checkup regularly to see where you stand and where you are heading. Now, who benefits from financial planning? तो financial planning से everyone benefits, ठीक है? So there are many instances of highly paid employees who came to financial grief, maybe because they did not plan for their post career years. ठीक है, तो बहुत लोगों को फाइनेंशियल ग्रीफ हो गया क्योंकि आगे के लिए प्लानिंग नहीं की थी. So basically what this whole chapter needs to say that little drops of water make the mighty ocean. बूंद बूंद से सागर बनता है. And with this we complete the chapter. So we just know that financial planning is very important for everyone and each one of us to save our money and hence our future. We come to the summary. Financial planning is the process of defining goals and prepare a plan to achieve the same. Okay. Needs are essential basics of life, foods, clothing, and shelter, whereas wants are simply increase the quality of life depending on one's values. A goal is destination. Smart goals enables you to live smartly. Setting plan for chosen period is the first step. The next step is to analyze and evaluate information. Next, with the information available, take a decision and formulate a plan. Then remain focused on the goal and face any hurdle or challenges. If be realistic while making the changes and modify the plan if required. Now, PT stands for physical training, RS stands for Indian rupees, and EG stands for example. Easy? So, we're done with the chapter. We'll do the next chapter in the next video. Till then, bye bye, take care.